the curling of finger will denote direction of magnetic field, but in circular loop your thumb will denote the magnetic field. Rule is same, only the, Okay. you can say, only the quantities are interchanged. Okay. Okay. Yes. Now got it. Yeah. Yeah. For the Okay. straight wire, your curling finger will denote the magnetic field and the thumb will denote the current. Okay. And for the circular loop, your curling of finger will Mm. denote the current, direction of current, and the thumb will point the direction of magnetic field. Clear? Eh? Yes. Now Yeah. Shazia, it's clear? Okay. So Yes. for Yes. today's class, Clear. let's take basically leave it here. Okay. So in the next class, we will be Oh, doing the magnetic field due to solenoid and the force on a current carrying conductor. That is the last topic, and your chapter will be done because this is a very small chapter. Majority of the portion is deleted, like the electromagnetic okay. induction, electric motor, electric generator, everything is deleted. Only very small portion is left. So that's why this chapter is not that much long and in depth. Mm. Okay. So in the Okay. last class, inshallah, we will be done with this chapter. Okay. I hope Okay. it's clear to you, dear. Yes, it is. Okay. Thank So you. that's all for this class, and take care. Okay. Allah Hafiz. Shab Khair. Mm. Hi, Alvin. How are you? I'm fine, sir. Okay, that's good. What happened? Your voice is not that much energetic. क्या हुआ? Yeah. नहीं sir, tomorrow my exams are starting. Okay. Fear of exam. Hmm. Final exam. Which subject? English. It's English. not So English that is a easy bad. one, यार. किस बात का Yeah, डर it's रहा है? not bad, but हाँ? just need to study. Oh, you need to study. English is a subject in which you have to I had study. like uh, 20 plus chapters I have. I know, like two books are there. एक तो आपकी बुक है, क्या नाम था उसका? फुटप्रिंट्स था कुछ? मेरा नाम जहन से उतर रहा है बुक्स का. Beehive and हाँ, बीहाइव एंड ये आपका क्या था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है कसम से. दूसरी बुक का क्या नाम था, गैल्विन? if what is it? Beehive and I लीफ, don't know. फर्स्ट लीफ कुछ ऐसी करके था क्या? The leaf, yeah, one chapter there is called the leaf. अच्छा अच्छा, द फर्स्ट लीफ था कुछ करके शायद से यार. The leaf, yeah, leaf. I don't know. हम्म. चलो कोई नहीं. कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से प्रिपेयर करना. मैथ्स की प्रिपरेशन And और फिजिक्स की कैसी चल रही है? it's going good. फिजिक्स After हो गया? English, after. साइंस हो गया? No, no, it's after English, which is on Tuesday. अच्छा, तो फिर साउंड की क्लासेस क्यों नहीं अटेंड की फिजिक्स की? I've attended, right? हाँ, यू डिडंट. लास्ट क्लास आपने मिस No. की थी. आर्या, हाउ आर यू डियर? आर्या ने अटेंड की थी, देखो लास्ट क्लास पूछो, हमने एक और रिवर्बरेशन Uh, किया था. Good evening, sir. I'm good. गुड इवनिंग. देखो आर्या, आर्या से पूछो. आर्या, हमने क्या क्या किया था? रिवर्बरेशन और इको कंप्लीट कर लिया था और एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड की थी हमने. Yes, sir. बस हमारा लास्ट एक टॉपिक रह गया था सोनार का. वो छोटा सा टॉपिक था, तो कल हम लोग कर लेंगे उसको. अच्छा, गैल्विन, आपका नेक्स्ट एग्जाम किस तारीख को है? ये साइंस का किस दिन है? Tuesday. ट्यूसडे किस दिन? क्या डेट पड़ गई यार? 18 Tuesday, तो I आप, think ट्यूसडे है आपकी 20th. 20 है. हाँ, Yeah, तो फिर 20th. कल मैं क्लास रख लूंगा. ठीक है. तो क्लास आ जाना गैल्विन साहब आप, थोड़ा सा. Yes, ठीक है. sir. देख लेना आके, थोड़ा सा ऐसा पोर्शन है वो जो आपको सिर्फ जस्ट यू कैन से थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ उसमें अंडरस्टैंडिंग वाला इतना खास है नहीं, बट आ जाओगे ना आप, तो आपको क्या होगा, अगर 3 नंबर का वहां से क्वेश्चन आ गया ना, एप्लीकेशन ऑफ साउंड से, एप्लीकेशन ऑफ Yeah. अल्ट्रासाउंड से, तो आपके थ्री थ्री मार्क्स कंफर्म रिजर्व्ड हो जाएंगे. तो 3 मार्क्स इज, आप एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको मालूम ही है. Uh, ठीक है. आर्या एंड yes, sir. रीम, आप भी. हेलो रीम, अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? Walaikum salam, sir. I'm good, sir. How are you? आई एम फाइन डियर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. You're welcome, sir. Okay, Reem, so don't miss the class of physics next, the coming class. ठीक है.
Sir, wasn't I supposed to have maths class right now हाँ instead हाँ, of physics? मैथ्स ही बच्चे, मैथ्स ही है हमारी क्लास। आई वाज जस्ट, क्योंकि मुझे कंफर्म करना था कि किस किस के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, क्या क्या चीज़ें, मैथ्स क्लास है। सो बेसिकली नम्रता मैम इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो आई विल बी टेकिंग योर मैथ्स। ठीक है। Okay, sir. सो Okay, गैल्विन इज sir. ऑलरेडी माई स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। सो या इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, मैंने सोचा लाइक आप लोगों को तो पता लग जाएगा मुझे थोड़ा सा क्या है क्या नहीं। आपका आर्या, तो आपका तो शायद से 2 मार्च को शिफ्ट हो चुका है एग्जाम। Third. 3 मार्च, हाँ। सो चलो, अच्छा आ जाए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स ज्योमेट्री करेंगे आज हम लोग। क्या? What will you take, sir? यूक्लिड्स That's not in my portion. सिलेबस में नहीं है आपके? No, sir. And Monday is my maths exam, so. ओके ओके, जस्ट चलो देखते हैं, कुछ और ले लेंगे, कोई बात नहीं। So हेलो, can you अस्सलाम clear my वालेकुम। doubts from polynomials? ओके ओके, श्योर, विल टेक इट। हेलो जब्बार, अस्सलाम वालेकुम। Alaikum assalam. हाउ आर यू? Fine. ओके, दैट्स गुड। ओके सो यस, सो ठीक है। गैल्विन, आपका भी एग्जाम आई थिंक कब, आपका एग्जाम कब है मैथ्स का? Last, the लास्ट math is a fifth exam. The किस दिन है? date पता नहीं, but let me just check one नहीं, second. डेट डेट नहीं याद है? नहीं, I haven't checked. अच्छा अच्छा, Yeah, one गैल्विन साहब क्या कर रहे हो आप? second, one second. चलो जरा मैं, ये सारे आपके डाउट्स कहाँ पर है बच्चे, बताओ चलो। It's my maths exam is on 27th. 27th है, ठीक है। जब्बार, व्हेन इज योर एग्जाम ऑफ मैथ्स? Mine's my maths as a maths Next exam Sunday, is like not the this last. Sunday. Okay. जब्बार, यस टेल मी। Sir, the next Sunday, sir. Not this one, but one after. नेक्स्ट संडे इज, लेट मी चेक, इट्स 25th। Third. 25th, 25th, no? 25th, Sunday. 25th. 26th, या sir. Yes. 25 ऑफ February, ठीक है चलो। ओके, देखते हैं कैसा रहता है, क्या क्या है, डोंट वरी। हेलो जैन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर? Fine, sir. ओके, दैट्स गुड। Okay, so does anybody have any doubt apart from Arya? At least say yes or no. Sir, I was having actually yes, I was having Mm-hmm. uh I I told to ma'am that I was having doubt. Mm-hmm. Let me check once again which was that. Mm-hmm. Okay. Okay, Arya, let me know the thing in which you are having doubt. Any specific question or a topic? Splitting the middle term, and I Okay. don't understand when I have to like find the zero of the polynomial or when I have to split the middle term or when I have to divide. Because all of the questions, like, they're very similar because they all say factorize. So I don't know when I should do what. Okay, let's take one question. In that question, I will be explaining all the things. Just give me a moment. I will Okay. be taking the basic question of mathematics. In that, we will be doing everything. Okay? Because let's start from basic a little bit, then we'll move forward a little bit upper side. Okay? Does anybody have any doubt apart from Arya? Please let me know. Like Reem was searching something, so don't, apart from Reem as well. So Arya, do you have the division of polynomial as well? Yes, sir.
I don't understand what the middle term schools want. Like NCRT has Splitting the omitted. middle term. No, I'm asking division of polynomial. It's like they'll give us like Two polynomials. They will give you two polynomial, and you have. Then they will say that divide the polynomial by this. sometimes they say it directly, but sometimes they don't. Sometimes they just say factorize, Hmm. and when you factor, and sometimes like they say factorize, and sometimes you only have to split the middle term, but sometimes you have to find the zero of it, divide it, and then split the middle term. So I don't get when I Acha, should do what. you are a little bit confused, Arya. You are a little bit confused in two things. So factorize means and splitting of term means same thing. Factorize is the nothing but the splitting of terms. Factorize means make the factor of them. A middle term split is also the same thing. Okay. So first doubt is clear of your that you were confused between factorize and middle term split. We will do the question. I'm just telling you the difference. So there is no difference between middle term split and the factorize word. Clear? Okay. Okay. Now one term is there in this chapter that is called factor theorem. Okay. So in the factor theorem, one polynomial, a linear polynomial is given, and you have to find out the value of x from that polynomial. And when you will substitute the value of x into the polynomial, you will get the answer, and then you will say whether it is the factor of this polynomial or not. Okay? Okay. We will do the everything. Okay, let's do it. Do the question. Just a moment. Where is it? So as this is a revision class, so nobody has no doubt till now, apart from Arya. Sir, I'm Hmm. having in surface area and volume, Mm-hmm. exercise 13.3, whole questions I'm not able to understand. Exercise 13.3, all questions. Yes, sir. So Like I'm not able to figure it out how to do. just a moment, dear. There are 8 questions. Hmm. So yes, Reem. So what we will do is that we will do we will skip the similar question, but we will do the unique question because 8 or 9 questions are it's not possible to do in a single class. Okay. So we will do the Okay, similar sir. types of question. Okay. So let's understand this thing. How to basically what are the things that are there in the polynomial. So this is a polynomial p of x is equals to 6x square plus of 17x plus of 5. Okay. Okay. So this polynomial can be compared because polynomial we are basically taking. So this is a quadratic polynomial. Do you remember what is quadratic? The polynomial having degree 2 is called Yes, sir. quadratic. Okay. So I can write this is the general equation of a polynomial of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Clear? So now if I compare this thing with this polynomial, what I get is that I get the value of a as 6. Clear? The value of b as 17. The value of c as 5. Bolo yes or no? Clear? Hai? Yes, sir. Does anybody have any doubt till now? ये बताओ. No, यहाँ sir, तक clear है no ना? doubt. ठीक है? Very good. So let's understand.
how to split this middle term, that is 17x. ठीक है, 17. So you have to split this in similar manner. So I am splitting basically b as x, not x1. Let's take it as क्या लूँ मैं इसको, b को किस तरीके a ले लेता हूँ, चलो c1 और c2, not c1, let's say this thing, this is r1 plus r2. So I am basically splitting this r1 b as r1 plus r2 or r1 minus r2. So I can split either b as r1 plus r2 or I can split b as r1 minus r2. It depends on the question. ठीक है? So this b, so a and c. So this a, c should be equals to b. Sorry, not b, just a second. They basically the r1 into r2. अब देखते हैं 17. Now take the value of AC. AC is 5 into 6. कितना होगा? 30. क्लियर है यहाँ तक? दिस इज, ये वाला पार्ट तो क्लियर है. चलो अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, अभी इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं. ये बताओ आप, ए और सी क्लियर है आपको? अगर इफ यू स्प्लिट ए, इफ यू मल्टीप्लाई ए एंड सी, दिस वुड, यू विल गेट 80, ओ सॉरी 30. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now the thing you get 30 is that you have to make pairs of this 30 in such a manner that आप इसको फैक्टराइज कर लो, आप इसको इस तरीके से स्प्लिट कर लो ताकि आपका मिडल टर्म आ जाए ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे उन फैक्टर्स को. सो इफ आई टेक 30, फैक्टराइज दिस 30, अगर मैं इसको 30 को फैक्टराइज करता हूँ, फैक्टर मतलब इसको 2 से डिवाइड देके कौन कौन से फैक्टर इसमें आ रहे हैं, जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं हम उनको लेते हैं. देखो 2 से दिया, डिवाइड किया, 15 आ जाएगा. 3 से डिवाइड देंगे 15, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है. नेक्स्ट 5. नाउ 5 इज डिविजिबल बाय 5 ओनली. सो आपके 30 का फैक्टर क्या बना? 2 इंटू 3 इंटू 5. क्लियर है? बोलो यस और नो. Yes. Yes, sir. So now we have to use hit and trial method to take the pairs. हमें इस तरीके से इन पेयर्स को लेना है ताकि हमारा, या तो हम ऐड करें इन टर्म्स, दो पेयर्स बनाए, या तो हम उनको ऐड करने पे हमारा मिडिल टर्म आए, या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करने पर. क्लियर है? यहाँ Yes. समझ में आया आपको? ये वाला टर्म मैं हटा देता हूँ. चलो, ये आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा ऐसे. अब ये देखो, अगर मैं 5 इंटू 3 लेता हूँ एंड 2 अगर मेरा अलग टर्म रहता है, 5 इंटू 3 कितना होता है? 15. 2 एज इट इज 2. 15 और 2 को मैंने अगर ऐड किया, व्हाट यू विल गेट? 17. 17. आपका आ गया यहाँ पे 17 मिडिल टर्म में. 15 और 2 को मल्टीप्लाई करो. बोलो, 15 और 2 को मल्टीप्लाई करो. Yes, sir. व्हाट इज द आंसर? 15 Yeah. 2 जा 30. 30. You are getting AC. Yes, क्लियर sir. हुआ? Yes, sir. क्लियर हुआ या नहीं, बताओ. Yes, sir. Yes, sir. So this is the method. This is the simplest method you can take. Just multiply the coefficient of A and C. ठीक है? Whatever you will get, split them and take the factors. This factor will give you the middle term, either adding up or subtracting them. So write this px is equals to 6x square. 17 can be written as plus, because x is also getting multiplied. So instead of direct writing 15, I'm writing 15x plus 2x. बोलो yes or no, clear है या नहीं? Plus 5. Only middle term should be split in such a manner. Clear? Yes or no? Please let me know. Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. So if you now, if you take common, so this is a single pair, this is a pair, and this one is the second pair. Two pairs you have got. So what is common in this? X is common and 3 is the multiple in both the terms. I can take 3x common. Yes or no, everybody? Yes, sir. And Sir. 2 will be left,
and x will be left because x square is there plus what is left? 3 is taken out common, so 5 will be left inside this bracket. 3 2 is 6, x into x square. 3 into 5 into 5 into 3 into 5 15, and x is also getting multiplied, it would become 15x. Clear है ये वाला point? Yes, sir. ठीक है, plus because plus sign is there ना, ये वाला plus sign. So now this is the same factor, so I will write it down as it is. There isn't anything common. Only what is common is that 1 is common. So I'm taking 1 common from this term. So now everybody, you can see this thing 2x plus 5 in common in both the terms. Can I take 2x plus 5 as common from both the terms? And Yes, in sir. if you take the common, what will be left? 3x plus 1 will left in one bracket. So this is called, these are called the factors of the polynomial. Am I clear to everybody? Please let me know. Yes, Yes, sir. sir. Now, if you equate them with 0, this will become the zeros of the polynomial. Because if you equate them to 0, what will happen? So if you equate each factor to 0, 2x plus 5 will be equals to 0 and 3x plus 1 would be equals to 0. Clear? So x value of x would be, take 5 on the left hand side, it would become negative, and 2 is there in the multiplication, so it would go in the division. So x is equals to x minus 5 by 2 and x is equals to minus 1 by 3. So these are called zeros of the polynomial. Please let me know, am I clear to you till now or not? Yes, sir. आर्या, अब ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एंड फैक्टराइज और स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या डिफरेंस होता है? Yes, sir. तो मिडिल टर्म और फैक्टराइज वर्ड का मतलब सेम है. मिडिल टर्म स्प्लिट बोल सकता है आपको. देखो यहाँ पे बोला इसने फैक्टराइज. इस क्वेश्चन का मैंने स्निप छोटा लिया, इसके आगे लिखा था विद मिडिल टर्म स्प्लिट. Okay. ठीक है. सो अब आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके सिलेबस में लॉन्ग डिवीजन मेथड है या नहीं. Yes, sir. लॉन्ग डिवीजन मेथड है कि, जस्ट अ सेकंड, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा. अच्छा देखो, उससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले हम लोग एक फैक्टर थ्योरम कर लेते हैं. व्हाट इज बेसिकली फैक्टर थ्योरम? Everybody clear? Please let me know. Hey, nobody is responding. What happened? Yes, sir. It's clear. Clear? Galvin, Arya, Rumaisa, Riaz, Zan, Yes, sir. Jabbar. I want interacting session, Yes, but sir. you are not responding to me. A little bit disappointment is there. It's clear. Chalo, that's good. So this is the question. I'm just okay, which is saying that factorize using factor theorem. So using factor theorem is very simple. It is completely straightforward. So how to factorize? Okay, so similarly, first of all, what you need to do is that you have to split this thing similar to the, so p of x is, so not p of x, this is p of y, y square minus 5y plus 6. So this is the polynomial which you have given. Bolo yes or no? Yes. ठीक है, very good. Just a moment. Okay.
Yeah, so you can see this thing. If you want to factorize using factor theorem, what you will need is that this is 6, the constant term, because this is a constant now, so nothing is getting multiplied, any variable is not multiplied with this term, so this will be called as constant. Yes or no? Yes, sir. Yes. So this factor is nothing but AC, this is 6. Okay, because if you multiply 6 into 1, coefficient is 1, na A is 1 here, so it would be 6 into 1 would be 6. So the factors of 6 would be either 1, so 6 can be factorized like this, 1, 2 and 3. Yes or no? So Yes, what you sir. will say, Yes. 6 will be having factor as 1, 2 and 3. Okay, sir. The factors of 6 are 1, 2 and 3. Clear? Hai? So factor theorem Yes, sir. says that factor theorem, so you have to what? You have to basically substitute the value of factors into the polynomial to find out whether they are the factor or not. So first of all, let's put 1, p of 1 in the polynomial. So it would become 1 square. In place of y, you have to put 1. 5 into 1 plus 6. So this will become 1 minus 5 plus 6. Clear? Yes. Okay. So 1 minus 5 plus 6. Yeah. So this will become 7. 6 plus 1 is 7 minus 5. So 2, you are getting the answer if you place this as 1. So by the definition of zeros of the polynomial, that specific value of the term should make the polynomial equals to 0. It means that it should nullify the value of the polynomial. उसको polynomial को value 0 के equal बनानी पड़ेगी. या तो it means that आपकी जो ये value 2 आ रही है ना, it should not be 2, it should be 0. तभी आपका वो factor कहलाता है. Clear है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यही तो होता है ना, जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना दे इफ यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन द पॉलिनोमियल. Sir, can you explain once again? आई एम सेइंग कि आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है, अगर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे इस पॉलिनोमियल में, इट विल मेक द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो. ये पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर हुआ अब? Yes, sir. Yeah. ठीक है, तो ये जीरो बना रहा है क्या 1? इज इट मेकिंग द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो? Yes. बोलो. No. Yes. No, na? So it means that it is not a factor. So we'll write. So you will just skip it. Okay? You will not write. You will write not a factor. Next is substitute the value of 2. Okay? Is equals to 1. Not 1. Sorry. 2 square minus 5 into 2 plus 6 is equals to 2 square is 4 plus 6 minus 10. 10 minus 10 is equals to 0. Yes, it is making a polynomial 0. So this will be a factor of this polynomial. Clear? Hai? So what you will write here? So y minus 2 is a factor of p of y. Clear, Arya and everybody? Yes. Galvin, Arya, Yes, sir. Shreem, Rumaisa, Yes, sir. Jabbar, Zain, Riaz. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now you got the first factor, because so as you know this thing, like this is a quadratic polynomial, so it will be having 2 zeros because the degree will define the number of zeros. Yes, Okay, sir. if there are 2, if the degree is 2, so how many zeros will be there? Bolo? 2. Yes, 2. So एक हमें मिल चुका है. Let's find out the next one. That is, अब हमारे पास third factor is 3 is equals to 3 square minus 5 into 3 plus 6 is equals to 3 square is 9 minus 15 plus 6.
So 9 plus 6 is 15 minus 15. It is equals to 0. It means that so y minus 3 is a factor of p of y. So y minus 3 is a factor of p of y. So you can write this as y square minus 5y plus 6 can be factorized as what? Y minus 2 and y minus 3. Clear? Everybody? This is called factor theorem. This is how you will Okay, sir. factorize using factor theorem. Okay, sir. Okay? Okay. Everybody please let me know. So this is the form Okay. steps of the factor theorem, and these are the steps of the middle term split. Clear? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Clear. Okay. So yeah. So what you were telling me, you were telling me just a second. Okay, just a moment. So you have basically long division method as well. So let's take a long division question. So basically a long division question, it basically says that suppose that p of x is given as x square minus 5y plus 6, okay? Not 5x, not y, it's x. 5x plus 6, and g of x is given as x minus 2. So you have to divide this polynomial by this uh, polynomial. Clear? Eh? Yes. Everybody, Yes. please let me know. Is it clear? Yes, sir. It's Okay, clear. chalo, that's good. Okay, so let's divide it. Just a moment. ठीक है? So according to the question, ये आपका divisor है. ठीक है? ये आपका dividend है. Sorry, ये आपका divisor और ये आपका dividend है. Just तो आप how you will write? You will write आप p of x को कैसे लिख सकते हो? आप इसको जब डिवाइड करो, इसको जब डिवाइड करोगे इस नंबर से, तो कुछ आपका क्वोशंट भी आएगा. बोलो यस और नो. g of x will be multiplied with the quotient q of x प्लस आपका कुछ रिमाइंडर भी बचेगा. दैट विल बी कुछ x के टर्म्स में भी बच सकता है, वो कैसे भी बच सकता है, वो डिपेंड करता है. सो दिस इज द लॉन्ग डिवीजन फॉर्मूला. ठीक है, अभी हम इसको मैं देखो सेटिस्फाई भी कर पाऊंगा, डोंट वरी. सो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन फॉर्मूला लेते हैं. सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके वर्किंग बताऊंगा, हाउ यू विल फाइंड आउट. तो ये आपका डिवीजन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इससे आपको डिवाइड देना है x माइनस 2. ठीक है. सो सबसे पहली चीज होती है आपकी, सो आपको इस टर्म को यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म वेरिएबल x विद सच अ नंबर, विद सच अ थिंग कि आपका x स्क्वायर आ जाए. ये आपकी जो यहाँ पे टर्म है ना, एक्स स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है, वट एवर इट इज, ये इसके बराबर आना चाहिए. अगर आपके पास x है, सो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विद x टू गेट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर? बोलो. X. x के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए. वेरी गुड. x इंटू एक्स, बाद वाले की फिगर छोड़ दो, जस्ट फर्स्ट वन ओनली, फोकस ऑन द फर्स्ट वन. x इंटू एक्स, यू विल गेट x स्क्वायर. वेरी गुड. अब आपका नेक्स्ट टर्म देखते हैं. नेक्स्ट टर्म क्या है? माइनस है. माइनस 2 इंटू एक्स विल बिकम माइनस ऑफ 2x. एज इट इज इसको राइट यहाँ पे नीचे ले लो. यू विल नाउ डिविजन होता है आपका, सॉरी सब्ट्रैक्शन होता है. साइन विल चेंज, दिस विल बिकम नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव. सो दिस x स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. ये पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव पॉजिटिव 2x है, नेगेटिव 5x है. क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस 3x प्लस 6 एज इट इज आप नीचे ले लो. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. वेरी गुड. नाउ टेल मी, बाय विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई द x टू गेट द वैल्यू ऑफ माइनस 3x? हमेशा आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है. इसका ये फर्स्ट टर्म और ये वाली फर्स्ट टर्म. -3. माइनस 3. वेरी गुड. minus 3. So minus 3x into x will become minus 3x. Next term is minus 2
into -3. What will it become? +6 or -6? Or Positive. Positive. Very good. So now subtraction again. This negative sign will become positive. This positive will become negative. So negative and positive, it get cancelled. Bolo yes or no? Yes, sir. This will get cancelled. +6 and -6. 0 is left. So now you can write this x square minus 5x plus 6 as p of x can be written as, what is the value of gx? That is x2 x minus 2. What is the value of qx? ये आपका qx होता है quotient into x minus 3 plus remainder. It can be 0 or it can have something. So अभी हमारे केस में 0 है. So whatever, so basically ultimately what you will get as x minus 2 and x minus 3. अब बताओ क्लियर है आपको ये आर्या? yes, sir. अभी देखो एक और क्वेश्चन Exactly. करते हैं. Yes, Reem, you said something there. I'm not totally clear about it. Yes, dear. Sir, I'm saying I'm not totally clear about it. So dear, आपके सिलेबस में नहीं है ना? अभी आपके सिलेबस में है बच्चे ये? I think yes, there is. अच्छा देखो, ये वाले, ये तो सारे स्टेप्स क्लियर है आपको? Yes. ठीक है. अब देखो, मैंने बोला था ना आपको gx इंटू क्यू एक्स, पी एक्स कैन बी रिटन एज gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. ये आपका होता है डिवाइजर, ये आपका होता है क्वोशिएंट, ये आपका होता है रिमाइंडर. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. तो मैंने क्या किया, gx की वैल्यू क्या थी, x माइनस 2 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ मैंने पुट कर दी, इनटू साइन एज इट इज यहाँ पे आ गया. qx की वैल्यू क्या निकली, x माइनस 3 निकली. qx मतलब आपका क्वोशिएंट, वट एवर द क्वोशिएंट इज, just multiply it with this gx. Remainder is 0. तो आप 0 ऐड करो समथिंग, it will be 0, it will be nothing, it will not get add up. 0 is some nothing. So ये आपका ultimate px can be written as x minus 2 into x minus 3 if you divide it by x minus 2. Okay, Clear है? sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन ले. Is everybody clear with this? Galvin, Jabbar, Rumaisa, Zain, Yes, sir. Ariaz. Yes, sir. I'm clear. Okay. Like everybody, this is a class for everyone. Like only 2 or 3% are telling me that it's clear. So what I will assume the others? Are they not not clear till yet, or I assume that you are clear? Because I'm continuously asking, but only apart from 2 or 3 students, nobody is replying to me. So this is a class, so this should be a two-way conversation. I think some of you must, like, I don't think that anybody here is taking the class first time with me. Everybody, like Jabbar has already taken class with me, and Riaz as well, Rumaisa as well, Reem and Galvin and Arya are my regular students. So, like apart from 3, so I didn't get any response from Zan regularly, not regularly, is Jabbar, not Riaz, nor Rumaisa. I don't know what happened to you, but this should be a two-way interaction with teacher. If you don't interact with teacher, you won't be able to understand the thing what teacher is trying to give you. So it's up to you if you want to grab it or not, but I'm continuously asking because that is my habit. Okay. So at least try to be, you just have to say yes or no, or try to be a little bit interactive so that I can feel that yes, you are getting my point or not. I just want honest. I don't want yes or no. I don't want every time yes. If just like see, Reem has told me that she didn't get my words, so I've explained it again. So at least you should have told me that yes, at least yes or no. That should be like sufficient for you to tell me at least. So let's take one more question. Because I'm not that kind of teacher जो just बोलता जाए पूछे ना किसी से कि समझ आया या नहीं. और ये लाइक आपने देखा भी होगा, पहली दफा क्लास नहीं ले रहे हो आप मेरे साथ, 2-3 क्लास आप एटलीस्ट ले चुके हो सभी लोग आपसे मेरे साथ, फिजिक्स, आइदर फिजिक्स और साइंस, मतलब साइंस और मैथ्स. सो इस चीज को आपने नोटिस किया होगा, तो दैट्स व्हाई, एंड दिस इज अ हैबिट ऑफ माइन. सो
लेट्स सी नेक्स्ट वाला, इस वाले क्वेश्चन को हम फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी पोर्शन में जो राइट नाउ जो एनसीईआरटी है ना आपकी, चलो रुक जाओ, मैं एनसीईआरटी के पोर्शन दूसरा वाला पोर्शन ओपन कर लेता हूँ, पॉलिनोमियल्स, 9th पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इस वाली एनसीईआरटी में ये ओमिटेड पोर्शन है आपका, ठीक है। आ रहे आप, क्लियर हो आपको, ये कोई डाउट है इसमें? No, sir. श्योर हो गए आप कैसे क्या चीज होती है? Yes, sir. चलो रुको जस्ट अ सेकंड, ये कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग। इसमें भी नहीं, हाँ इसमें, इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं बेसिकली, इसे लॉन्ग डिवीजन कहते हैं, या कह दो आप, या फिर बेसिकली आप कह दो इसको रिमाइंडर थ्योरम। देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का है, सो एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, सो हाई चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जब जिसके सिलेबस में है ये, तो इसलिए, सो लेट मी राइट इट हियर। देखो ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन टुगेदर, इसको करते हैं। सो सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग कि डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस नंबर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px? x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1, क्लियर है? एंड gx is x minus 1, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई दिस Okay, sir. सिंपली, ठीक है। सो हम लोग इसको करते हैं। So this is x minus 1 and this is x4 minus 4 x cube minus 3x minus 1, ठीक है। Now I have to multiply x with such a number, with such a variable or with such a quantity that it should give me x to the power 4. Now tell me what should I multiply with x? X, x square or X x. cube. X cube, because x is already there. If I multiply with x cube, power will get added up because base are same. X cube plus x cube into x will give you x to the power 4. So x cube will multiply, clear? Yes, sir. So x cube, so now it will get x cube हो जाएगा and minus x cube minus 1 into x cube will be minus of x cube, बोलो clear है? Um, Negative Yes. sign will come here and sign will change positive because this is negative. So this x to the power 4 will get cancelled. Now minus of 4x cube plus of x cube, what will be left here? 4. No. So I'm little confused. How x cube came over there? Yeah, X cube after like minus x cube. I didn't get your words, Arim. अब थोड़ा सा explain करो, क्या कह रहे हो आप? No, I'm saying that. So how do you write x cube over there? Minus 1 into x cube, na? No, after minus x cube. What I've written? Minus x cube, x to the power 4 multiply with x cube. I got x to the power 4 No. minus 1 into x cube. It will get minus of x cube. Oh, okay, okay. Now I get it. Clear है? If Yes, sir. negative of 4x cube and positive of x cube is there, so what you will get left? 3x cube, na? Yes. ठीक है? So take this term here, minus of 3x. Now multiply with x with such a number so that you can get x3 x minus of 3x cube. Now tell me what should I multiply with x? Minus 3x No, square. Minus 3x square.
वेरी गुड, -3x², ठीक है। So -3x² means -3x³ -1 into -3x². What you will get? Positive 3x². बोलो, because -1 into minus will become positive 3x². Positive 3x². Sign will change here. Okay, sir. ठीक है. So this will become positive and this will become just a second. इसको मैं थोड़ा सा -3 को लिख लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ इसको. क्लियर है? क्लियर होगा सबको ये? Yes, sir. अरे यार, मैंने मिस्टेक कर दी क्या कुछ? I didn't written down the 3. 3 हो गया. तो इसके बाद x³ जो आएगा -1 into 3x³, ये 3x³ यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे व्हाट विल बी लेफ्ट? सिर्फ x³ बचेगा ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा. -x², तो ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 भी नहीं आएगा. 3x तो आपका एज इट इज आ गया, ये माइनस का 3x और आपका पॉजिटिव का x². क्लियर है सबको ये? ठीक है. सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा. बोलो, क्लियर है? Yes. ठीक है. सो दिस x³ विल कैंसिल. सो यहाँ पे आपके पास क्या बचा? माइनस. देखो, पॉजिटिव की जगह अब इसका एक्चुअल साइन नेगेटिव है. क्लियर है? ये थोड़ा सा याद रखिएगा. x² -3x एज इट इज आप उतार लो इसको. So now I have to multiply x with such a number so that I can get x². Negative of x I should multiply. So negative of x will give you negative of x² -1 into -x. It will give you positive x. Clear? So this sign will change, positive, negative. x² will cancel this. -3x minus x, minus of 4x -1 you will carry here. Bolo, clear hai Arya and everybody? Now I have to multiply the x. I have to multiply the x with such a number so that I can get minus of 4x. Bolo. -4x. Yeah, -4x. ठीक है. -4x. ठीक है. So just a second. -9, not -4x. Reem, it would be minus of 4 because x is already there, na? ठीक है. So it would become minus of 4x and minus of 1 into minus of 4. It would be positive 4. ठीक है. So it will divide here. So यहाँ पे साइन चेंज होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव. 4x will cancel this 4x. यहाँ पे कितना है आपका? -1 और -4. It would be a negative of 5. So now there isn't anything. After this you can divide because -5 is a constant. क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो x आएगा, तो वो आपका सबट्रैक्ट बेसिकली डिवीजन में नहीं जाएगा. तो दिस इज द लास्ट स्टेप. तो आपका रिमाइंडर क्या बचा? -5. तो व्हाट, हाउ यू विल राइट p of x? You will write p of x as g of x into q of x plus r of x. तो p of x की जगह आप लिखोगे g of x क्या था आपका? x -1. बोलो yes or no. into q of Yes, x sir. आपका क्या निकला? 3x³ -x² -x -4. ठीक है. 3x³ Yes. -x² -x -4. r x क्या है आपका? -5. Clear everybody? Yes, sir. Any doubt? बताओ जल्दी से, कोई डाउट है आपका यहाँ पे? Sir, I'm only Sir, having one doubt. Like after you like multiplied with one number, then how the second number is coming on the Dear, right hand side? dear, you are having two terms in a single polynomial. If you multiply with this number is getting multiplied, not this only, this as well.
आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 3 को आप x-1 के साथ करोगे, यू विल गेट एज 3x-3। नॉट सिर्फ 3x नहीं आएगा आपका यहाँ पे, समझे? Okay, sir. I got ठीक it. है, Yes, sir. Now. हाँ So, ये Yeah. चीज, हाँ हाँ, यस यस। see, for the questions though, they don't directly write divide the polynomial by this. So, like, how will I know when I should divide or when I should just find the zero of it and then substitute x? डियर देखो, आपको वट एवर द थिंग, देखो, they will say if they want to divide na, if they want the division, they will specifically say that you have to divide with this polynomial, or they will say remainder theorem. Whenever you hear the word remainder theorem or the divide word, you have to perform this division. Clear? So, but in the questions, they're asking like to find the remainder of this polynomial when it is divided by the question. हाँ, so That time, you have to apply this. but like for the answers, we when I look at the answers, they're just like finding the zero of that polynomial and then they're substituting the x. Finding the zero of the polynomial is this method here that we have done this till now. This is the zeros of the polynomial. If you equate them to 0, you will get the value as zeros of the polynomial. Okay. ठीक है? Okay. Just a moment. So आया आपने ये सरफेस वॉल्यूम के कुछ डाउट्स भेजे थे क्या ऑफिशियल नंबर पे? Yes, sir. अच्छा अच्छा, Uh, so it's fine if you don't solve them because like surface area volumes, it's the chapter is okay for me. Polynomials, I have more doubts because it has more marks. अच्छा अच्छा, I have one more doubt in surface area, sorry, polynomial. ओके टेल मी। The x plus y cube, that identity, I don't understand. x plus y क्यूब, चलो x plus y होल क्यूब ना, Yes, whole cube, सिंपल। sorry. सो देखो, if you expand this, देखो, what you will do is that simply if you are not able to remember the formula, this is a simple trick. Can you write this as x plus y into x plus y whole square? Yes. ठीक है, so this would be x plus y. Yeah, expand this identity. This is x plus y whole square, that is x square plus x plus y square plus 2 x y बोलो, yes or no, clear है? Yes. Now Yeah. now you can directly multiply them one by one. X into x square, x cube plus x into y square plus, ठीक है, plus next is x into 2xy, so it is 2x square y plus, ठीक है। Now let's come to y into x square plus y into y square y cube plus y into 2xy, so it would be 2xy square. If you add them up, देखो सेम कुछ x plus y cube है आपका, x plus y cube plus 2x square 2x square y, और आपका कहाँ गया, ये रहा y x स्क्वायर, सेम ही है, x स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म है, सो इट वुड बी 3x स्क्वायर y प्लस यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है और 2xy स्क्वायर है, सो इट वुड बिकम 3xy स्क्वायर। क्लियर है? ये Yes, आपकी sir. प्रॉपर्टी रेडी हो गई।
बोलो, क्लियर है आर्य? एवरीबडी? That's clear. ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से 3x कॉमन ले लो, वो 3xy कॉमन 3 कॉमन ले सकते हो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ से आपने 3xy कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। Sir, I don't understand the 3xy, x plus y part. देखो आप यहाँ से क्या करो, x और y को देखो, x स्क्वायर y है, यहाँ पे x y स्क्वायर है, तो आप यहाँ से दोनों में से एक x कॉमन ले सकते हो, 3 तो कॉमन ले आप। Okay. ठीक है, फिर आप यहाँ से y देखो और यहाँ पे y स्क्वायर देखो, आप यहाँ से दोनों में से एक y कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर था क्योंकि आपने एक ही एक्स तो बाहर लिया, तो अंदर एक्स बचा आपका। यहाँ से आपने वाई स्क्वायर था, आपने एक ही वाई तो लिया, यहाँ पे आपका वाई बचेगा, प्लस साइन एज इट इज रहेगा ये। Okay. Okay. ठीक है, So, like, do I multiply 3xy with x and y, like distributive property? हाँ यस यस यू कैन। Okay. इफ यू मल्टीप्लाई दिस ना, देखो इफ यू मल्टीप्लाई दिस व्हाट विल हैपन, देखो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर ही टर्म है जो प्रॉपर्टी स्क्वायर बन जाएगी, यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वाई स्क्वायर होगी। जस्ट कॉमन थिंग, कॉमन जो आप लेते हो कॉमन थिंग, और कॉमन लेते हो ना टर्म में से, जैसे हमने पॉलिनोमियल किया था। Yes, sir. Any doubt anybody? Sir, no doubt. Chalo. So I hope this is clear. So like it's all about to end the class. So please let me know, does anybody have any doubt? आर्या क्लियर हो बच्चे आपको ये? Yes, sir. ठीक है, हमेशा जब भी आप इसको आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिले ना, x प्लस वाई क्यूब मिले होल क्यूब, या x माइनस वाई होल क्यूब मिले, सिंपली आप ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो उससे ये होता है, आपको अगर नहीं याद आ रही है एट द इंस्टेंट, तो आप थोड़ी सी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको, जस्ट बट फोकस माइंड के साथ करना। और आप याद कर लेते हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट याद नहीं आ पाती है तो यू कैन यूज दिस ट्रिक, नॉट अ ट्रिक, इट्स जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन जो आप मतलब आप लॉजिकल थिंकिंग से आप कर सकते हो। ठीक है, Okay, एग्जाम sir. टाइम में एटलीस्ट आप Okay. 2 या 3 मार्क्स अपने डिडक्ट होने से बचा लोगे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, मतलब आपके पास इतनी स्पीड है कि आप फाइंड आउट कर लो जल्दी से। तो अगर आप फिंगर टिप्स पे से, तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इफ आई सजेस्ट वन थिंग, कि आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आइडेंटिटीज, दैट व्हाट इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब, व्हाट इज एक्स माइनस वाई होल क्यूब, व्हाट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, व्हाट इज एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब, व्हाट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। So these identities should be on your fingertips, because right now you are a very matured students, you are in 9th class. ठीक है, so you cannot have any excuse that I just don't able to remember them and not. These are the properties that you will be dealing with either in the like till 12th class. If you are going to take the science stream, you will be having the like along with maths as well. So these identities will be applicable until 12th, even in more further applications, but I'm saying this to like max to max 12th, at least आपकी आइडेंटिटीज यूज होंगी ये। सो आप लोगों को ये एक साल नहीं, ये आपको आगे तक ही इम्प्लीमेंट करनी होंगी, तो ठीक है, याद रहनी चाहिए आपको ये, क्लियर है? Okay, sir.